तू एक बार इनिशिएट करेगा I do whatever I'm doing basically all the time. हाँ, you can do whatever. As always. What I've always been doing. Thank you. सुनील जब तक तू इनिशिएट नहीं करेगा हम बोलेंगे कैसे? भी क्या है? नहीं, क्या बात वीर से झगड़ा करके. Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Welcome back to क्या पका रहा है. All three of us are together again. It's been a while. पकाने आए वापस. पकाने आए वापस. इधर थोड़ा घर पे महाराज नहीं आया तो निर्वाण को बुलाया मैंने और कुछ नहीं. Censor that. तो on the last Premier League weekend हम लोग ने साथ में आर्सेनल और यूनाइटेड का गेम देखा basically. We're making it sound like Arsenal played United. I mean मतलब आर्सेनल का गेम और यूनाइटेड का गेम बैक टू बैक डबल हेडर साथ में देखा. निर्वाण के बर्थडे का वीकेंड 3 Eyes Monkeys में. सो लॉट ऑफ कैच अप अबाउट दोस गेम्स. कल चैंपियंस लीग भी खत्म हो गया. दोनों टीम बोथ द टीम्स वन. उसका तो अलग ही बात करेंगे ऑब्वियसली. स्कोर प्रेडिक्शंस जो पीछे निर्वाण के पीछे थोड़ा रिवील होने वाला बाद में. We're going to do a grand reveal, try to do a different reveal every week. Before we go ahead, please like कीजिए वीडियो को, subscribe कीजिए if you haven't to the channel already. Let us reach 1000 subscribers as soon as we can. But now We broke 500. we are at 584. कितने टाइम से नहीं आया निर्वाण. Anyway, so Sunil, let's get into this episode. Saturday game double header. You got there before me, both of you. ठीक है. United के गेम के पहले against Sheffield United. Normally people would show up, right? Do you feel the sentiment is still not as strong despite the 2 wins that we've seen after that? तो लगता था कि you've been saying ना बोर हो रहे थे इनको अभी. तो मैं वो एक छोटा समरी दूंगा कि ब्रेंटफोर्ड, शेफील्ड और जो कल का गेम हुआ रात का, लाइक शेफील्ड का गेम तो हम लोग सिंस वी आर ड्रिंकिंग टुगेदर मेरे को ज्यादा याद भी नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा पी लिया था. बट मेरे को घर जाने के बाद बहुत लोग बोले कि यार शेफील्ड वाला गेम तो यूनाइटेड डोमिनेट भी नहीं किया, बॉल भी नहीं रखा, कैसे जीत गए. तो मेरे को एक ही पॉइंट लग रहा है कि वी आर नॉट प्लेइंग, अपन होल्ड ही नहीं कर रहे हैं फुटबॉल, एंटरटेनिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डोमिनेटिंग दीज स्मॉल टीम्स, सपोजेटली स्मॉल टीम. तो मेरे को ये फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल नहीं देखना है यार, केची फुटबॉल. एंड मेरे को लगता है हमारा मिडफील्ड सबसे बड़ा वरी है. तो इसलिए मेरे को लग रहा है जनरल एक सेंटिमेंट मेरे को लग रहा है क्राउड में थोड़ा लो है कि वी आर नॉट सीइंग. कल भी मैंने ग्रुप में देखा जैसे ही फर्स्ट हाफ हुआ चालू हो गए सबका कि यार वर्स्ट फुटबॉल एवर सीन, इससे अच्छा तो सो जाता, और मजा नहीं आ रहा है. बट ट्रूथ है ना. हाँ, मेरे को आखिर में यार आई वांट टू सी फुटबॉल व्हिच इज लाइकेबल. वो वैन हाल भी आखिर में क्यों अनबेरेबल हो गया था बिकॉज लाइकेबल फुटबॉल नहीं था. जोसे भी एंड में क्यों. बट वैन हाल वो इंटेंशनली खेलता था बाय द वे. उसको पोजेशन बेस्ड फुटबॉल था टू कंट्रोल एंड इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट द ओपोनेंट, टेक योर चांसेस एंड स्कोर 1-0 2-0. But it's इंटेंशनल था. props to Ten Hag also. He does that to your supporters. तो मैं टेना का कितना भी, मैं एक्चुअली टेना के साइड पे ही हूँ, बट आखिर में यू हैव टू, अब आंसर्स उसको ही ढूंढना है ना. मैं कितना भी क्लब के ग्लेजर्स के बारे में बात कर दूं, इसके बारे में बात कर दूं, बट आखिर में आंसर्स तो टेना को ढूंढना Are है. you getting sold or no? Minority stake apparently 25% only. क्या मैं fucked. यार एक तो मेरे को मिडफील्ड का मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग ने माउंट को किस लिए साइन किया, वो खेलने वाला है नहीं खेलने वाला है, इज ही एडिंग टू द टीम और स्क्वाड, और वो एक बर्डन अब बनने वाला है कि बार इसको सिलेक्ट कैसे करना है. मेरे को अपना अगर मिडफील्ड अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है तो आई थिंक अ लॉट विल रिजॉल्व इटसेल्फ. But do you know what you need? Like when we were discussing video चालू होने के पहले, you were saying that मालूम नहीं है कि हमारा प्लेइंग स्टाइल क्या है. तो where do you need? हाँ, जैसा थोड़े वीक पहले अय्यर ने बोला था कि यार मुझे वो प्लेइंग स्टाइल नहीं दिख रहा है, तो मैं सोच रहा था यार क्या बोल रहा है ये टेना को इतना जल्दी कैसे. बट अब थोड़े गेम वीक्स के बाद मुझे भी ऐसा लगने लग गया है कि यार अपना, आई नो स्टिल अभी बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड है. कल एक्चुअली टेनाक ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि लास्ट ईयर हमारा बैक फोर सेम था, तो बैक फोर जब सेम रहता है तो मिडफील्ड को फीड करते तो वो उससे एक फर्क गिरता है. तो शायद वो उससे थोड़ा ये हो रहा है, बट स्टिल आई वांट टू सी यार अहमदाबाद खेलने वाला है. आई काइंड ऑफ डिसएग्री स्टिल. आई अंडरस्टैंड कि फुटबॉल बोरिंग है, ठीक है, बट टू द पॉइंट व्हिच आई टोल्ड अभिषेक आल्सो वो एपिसोड पे कि यार इट्स नॉट, यू कांट ब्लेम हिम कि वेयर इज द आइडेंटिटी. हाउ कैन योर आइडेंटिटी व्हेन योर सेंटर बैक पेयरिंग छोड़ो, all 4 of your defenders keep swapping. He's had to use Dallo on the left back and right back in one same game. How do players adjust to that? ठीक है. Added to that, there's a lot of pressure on a new goalkeeper who has made mistakes. ठीक है. When your defense is not settled, your number one is the last, literally your last stop, your last hope. He's buckled under pressure. Defense is not settled. Midfielder started off slowly in Casemiro, but still he has a winning mentality at least. But yes, he has struggled. Eriksen has lost his legs too. Now, if between Casemiro और Eriksen, one of them had their legs on them this season,
ठीक है, I can understand. Both of them have lost their legs. Eriksen cannot play full games like he played start of last season. We lost control there and consistency in the midfield also in pairing. ठीक है. When you United fans, अब तुम लोग बात करोगे मुझे स्टाइल देखना है, कुछ भी देखना है, भाई सो जाओ, फिर सो ही जाओ, मत देखो गेम, नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा. दिस इज व्हाट इट इज. नहीं, मुझे एटलीस्ट स्टाइल वाइल तो ठीक है. ब्रूनो जो हमारा टॉप प्लेयर होना चाहिए, ब्रूनो गेम में आता ही नहीं है. वो कभी 8 पे खेल रहा है, कभी 10 पे खेल रहा है, कभी राइट पे खेल रहा है. आई थिंक वो ब्रूनो का बेस्ट निकालना बहुत जरूरी है. अगर वो होने लग जाएगा तो फिर टीम अच्छा खेलेगा. ठीक है, दिस इज व्हाई आई अंडरस्टैंड. बट ब्रूनो को ब्लेम करना मुश्किल है. वो उसके पोजीशंस इतने चेंज होते हैं कि कैसे वो ब्रूनो एंड रैशफोर्ड, ठीक है, दो आर द टू प्लेयर्स हु बीन आवर कंसिस्टेंट प्लेयर्स ओवर द लास्ट 3 सीजंस. ठीक है. Now those are the players. Yes, Rashford has absolutely has a very dull season so far. Started very poorly. ठीक है, it's not like he's not had chances. He's missed easy goals. He's missed one-on-ones, poor touches. ठीक है. He doesn't know how to pass. He is struggling to adjust to a number 9. ठीक है, he struggles to adjust to a number 9. Now problem is that is because for 3 years he was the most prolific winger and striker. He's trying to pick up the ball on his own again. Now that is his fault that he's struggling to adjust because all professional players should adjust even at his age, right? I can't blame him too much because he's gone back to मैं ही करूंगा, ठीक है, मैं गोल मारूंगा, उसका मेंटालिटी उधर ही अटका है. Now you have to grow up from that, ठीक है, so fine, I can blame him for that. Bruno's the kind of guy who will be like fuck it, ना मैं कर सकता हूँ सब कुछ, मैं ही करूंगा. They are trying too hard is the problem. You can't blame them. कल जब एरिक्सन आया तब ब्रूनो अच्छा खेलने लग गया. तो पॉइंट वो है कि एरिक्सन कैन प्ले दैट इन बिटवीन वाला रोल और कोई वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए अपना मिडफील्ड स्ट्रगल कर रहा है. You can't give Bruno pressure. Okay, let's move on from United. ठीक है. बट एक पॉइंट है कि मेरे को क्या ये एपिसोड हर एपिसोड में खाली पहले 10 मिनट में मैं एपिसोड का नाम बोलूं कि भाई क्या पका रहा है ब्रो. Like ठीक है, Nirvan has just come to sit थोड़ा behind us and be part of that backseat driving. But नहीं, we will move on from United. Just quickly rounding up Champions League में. Same thing we saw in the Champions League game yesterday. First half, very poor game. Poor against Brentford, poor against Sheffield. But at least we got the results. But it's to note that these 3 teams are not doing the best. ठीक है. So I am not resting on the laurels and be like suddenly we can go beat City. But Sunil, at least the players who are under the microscope are doing something. They're trying to break into the team, right? Nirvan, talking about that, Arsenal not under much scrutiny, not been really bad this year also. 1 or 2 games have been okay. What do you think about your game against Chelsea? Shocking, no? The mistakes. I mean, yeah, okay, shocking mistakes. Yeah, the mistake that Mudryk made crossing that ball and it went into the goal. I think that was the biggest mistake because even he had no idea he was doing that. That aside, you disagree. I agree. Obviously, I agree. Come on, everyone. Does anyone disagree that Mudryk didn't know where the goal was when he took that shot? बट वो भी तुझे एग्री करना पड़ेगा. चेल्सी वाज प्लेइंग द बेटर फुटबॉल. आर्सेनल का कोई शॉट्स ऑन गोल नहीं था पूरे मैच में. आई थिंक that was actually going to be my first thing that I was going to say, that if we introspect on Arsenal as opposed to gifting Chelsea that 1 point, if we introspect on Arsenal and actually see a couple of places where we are sort of falling behind, I was going to say this point second, but because Champions League was last night, I'll say it first. Depth. We have to use, there are 4 prolific players that are really making the season for us. That is, I think, Martinelli, Declan Rice, Saka, Odegaard. They're like the ball goes to them, and when you look at the screen, you know that a positive play is going to come out when it goes to any 4 of these people. He chance ही नहीं है इन लोग को fuck up करने का. So the problem is that if you're relying only on these 4 and you're playing them week in and week out, and that's the only way you're getting results and points, एक को भी कुछ हो गया जैसे मार्टिनेली को हुआ, we struggled a lot trying to fill that gap. But doesn't that scare you? That's what I'm saying. That's the first point of introspection, that our squad isn't deep enough, one, to play so many games, and even if you just take Premier League week in and week out, you cannot rely on the same 11 playing all 38 games. I kind of little disagree. I think you have enough players you signed this year and in January, like a Trossard to fill for Martinelli. Nketiah, Havertz, Jesus technically falls so line. That's my second point. Havertz not showing up is a big problem for you. I think more than Havertz not showing up, I'm actually, after seeing the last couple of games, I'm not. Sorry, I was just going on and on in English. मुझे ऐसा लग रहा है कि Jesus can be used better ये playing style में, if not him improving himself.
क्योंकि हमारा अभी गेम प्ले क्या हो गया है, होल्ड द बॉल एंड डू अ लिटिल फ्लेयर बट कीप द बॉल विद अस. Jesus इज अ आउट एंड आउट स्ट्राइकर, तो उसका मेंटालिटी क्या है कि मैं टर्न करके गोल तक भागू. और उसमें इफ यू आर द टॉप मैन एंड वी आर बिल्डिंग फ्रॉम डीप, बीच में बॉल लॉस्ट होने वाला ही है, बिकॉज यू आर गोना ट्राई टू पुश अहेड बिफोर द प्लेयर्स आर देयर टू कवर यू. तो Jesus being in that position when we are playing with these four behind him is not as positive to the game, is what I feel. तो अगर Jesus तो भी Jesus स्टार्ट करता है कि हैवर्ट्स? last two Jesus has started, he's not been bad. He's not been bad by any means. I think just according to the way we've been playing, वो तो थोड़ा तुम्हारा भी मेरे को लगता है सेम ही प्रॉब्लम है. हैवर्ट्स को क्यों साइन किया, जैसे हम लोग पूछ रहे Yeah, हैं मेरे को actually, you know, फिट नहीं होता है. But yesterday when I saw Havertz come on थोड़े टाइम के लिए जो भी आया, और चेल्सी के लिए, चेल्सी के सामने भी, he is growing into that Arsenal way of play. So maybe वो after Declan maybe वो ओडेगार्ड को सपोर्ट कर सकता है वहाँ. I think that would be a good position for him, which is around left attacking mid of sorts. निर्वाण बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब पोचेटिनो आया ना चेल्सी का मैनेजर बन के, ही ब्रॉट नॉर्थ लंदन डर्बी वाइब्स ओनली डीप इनसाइड, नॉट लंदन डर्बी वाइब्स, और बोला आर्सेनल को तोड़ना ही है. बट टू द पॉइंट निर्वाण, ठीक है, पुअर स्टार्ट, अग्रीड अ गेम. डिड यू एक्सपेक्ट टू स्टार्ट लाइक दैट? नहीं, नो वन डिड. मैं सोचा भी नहीं था कि चेल्सी कुछ करने वाला, इवन दो स्टैमफोर्ड ब्रिज था. हमारा स्कोर लाइन प्रेडिक्शन देखना था लास्ट वीक का कि हाउ कॉन्फिडेंट वी वर कि आर्सेनल स्मैश चेल्सी. लेकिन because Sunil refused to talk about VAR about United, Nirvan, please. You were sitting with me. हम लोग गेम साथ में देख रहे थे, by the way. डाउन थे तो हम fully into साथ में गेम देख रहे थे, by the way, like I said in the start. मैं थोड़ा एक दो क्लिप डालूंगा अभी. Nirvan abusing in peppery language all over the place. The ball. Nice goal, man. Nice goal. Nice goal. Who is it that tweeted? Of course, I meant I think he intended it. Yeah. Ghanta. It's a fucking Bro, potential goal. deflection. Ghanta he was going. Was that Onana on goal? He wasn't even looking at the goal. He missed his ball. Hey, he was laughing on Onana. So celebrate the fact that you're leading, not the goal. It's a shit goal. When that went in, but हाँ, वो फर्स्ट पेनल्टी मुझे भी नहीं लग रहा था. थैंक यू. मैं बोलने वाला था सुनील, आप बताओ, हम लोग साथ में बैठे थे, आपको मुझे लगता है याद कि दैट्स अ पेनल्टी? नहीं, I don't think so. The player is diving for the ball. Chelsea player reaches it first, understood. But player is diving for the ball and not in unnatural position, going towards the ball's trajectory. Now, if the Chelsea player it hits him and it goes onto the hand, कैसे penalty हो सकता है? मैं कब से वही बोल रहा था सुनील तेरे को अभी कि तूने डिसएग्री किया था. एग्री एट दैट टाइम, बट नाउ आई एम टेलिंग यू टू थिंक अगेन. इसलिए थोड़ा ये पूरा सब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर जो दैट, आई मीन दे सेड अरे हाउ कैन बी सब्जेक्टिव विद एवरी कॉल. भाई कितना टाइम लगेगा बे? कॉमन सेंस यूज करके देखना है कि इंटेंशनली हाथ ऊपर था, हैज इट ब्लॉक समवन बिहाइंड हिम? यस, नो, इट टेक्स इतना 2 मिनट तुम लोग देते हो, 2 से 2 मिनट के 2 मिनट 20 सेकंड लगेगा, और क्या ही फर्क पड़ेगा. आई थिंक इट्स रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि देखो पीपल आर सेइंग कि यूनाइटेड एक्सक्यूज बना रहे हैं, ठीक है, एंड निर्वाण जोक भी मारेगा इसके ऊपर, आई नो, बट ही विल एग्री. We've also been victim enough, and yes, sympathetic. Yeah, you thing is, हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 mistake 2 mistake गेम आफ्टर गेम टीम का मोरल टूटता है. समटाइम्स यू नीड दोस लकी ब्रेक्स टू गेट अ रिजल्ट, ठीक है. हम लोग को ये सीजन 4 गेम में ऐसे हुआ है कि वी नॉट एबल टू ओवरकम इट. फाइट मेंटालिटी इशू स्क्वाड में इनके साथ हुआ अगेंस्ट चेल्सी, हु बीन अबिस्मल, ठीक है. चेल्सीज गोल्स केम फ्रॉम दैट पेनल्टी डिस्पाइट बीइंग गुड. द गोल केम फ्रॉम द पेनल्टी एंड दैट fluke shot goal, whatever the hell that was. Don't in call Madrid. it a shot. It was a cross. Arsenal mistake from Sanchez, bit onto it, came back into the game. हम लोग को वो चांस ही नहीं मिल रहा है where we are having a That was a great, from a central midfielder, that finish was epic. Correct. Can we just put that on the record? हाँ ठीक है, but my What a point being, finish. when a mistake goes in your favor, you can capitalize on it, Yeah. you build on it. हम लोग के साथ वो हुआ नहीं है. But anyway, Nirvan, to sum that up, Champions League result done. Draw against Chelsea, not ideal, but he get done. You're third in the table. Yeah. We need the Sheffield game this weekend. I Sheffield, think it's going to be a great massive time. confidence booster. If Crystal Palace hold on defensively like they have against other teams, not against Newcastle, I don't know what the hell happened there. You all win your game. Somehow, United beats City, which हम लोग आएंगे उसके I ऊपर. thought you were going to say, if y'all win your game, I was like, bro, in what universe, bro? Itna And I खराब नहीं है. apologize, this cough has still been lingering. Top of the table,
right? ठीक है सुनील, now to you. 2-0 win for us, draw for Tottenham is the minimum required. We- नहीं, we मेरे को call the लगता है prediction soon. अपन जिसके No, बारे में no, बात नहीं so- कर रहे वो द बेस्ट टीम हैज बीन प्लेइंग इज स्पर्स यार. मैं वही Spurs बोला काफी कि अच्छा खेल he was telling before the recording मैंने started. मंडे नाइट मैं गेम आता हूँ देखा बट मंडे नाइट मैंने गेम देखा. स्पर्स हैज बीन प्लेइंग बहुत अच्छा खेल रहा है और सॉन अच्छा खेल रहा है. उनके रिचार्लिसन गोल असिस्ट कर रहा है एंथनी से ज्यादा. मेरे ख्याल से उसका नंबर हो गया होगा. बट नहीं, अभी भी नहीं, दे हैव बीन प्लेइंग वेल एंड मेरे को लगता है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है बट साइलेंटली दे आर एट टॉप ऑफ द टेबल. एंड इस वीकेंड भी दे आर प्लेइंग अवे पैलेस अवे बट But you think they can last what? Son or Madison if they even हाँ if ऑफ one of कोर्स them वो again लास्ट करने वाला are ही. not available like how Madison was it. But can I tell you all one thing? Haven't there this problem with Harry Kane all these years? Ki when Kane was playing well and doing well, but Kane gets injured for those 2 months, then they tail off. It's over. But I feel in this time, the manager has made sure कि Son or Madison are not the only star. He's trying to rotate that attacking force. I feel he's trying to prepare for. They're playing good football. ये जो डिबेट होता है कि नए मैनेजर को टाइम लगेगा, टेन हाग को टाइम लगेगा, यार उनका स्पर्स का नया मैनेजर तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है. I'm sorry, what was expectations and what I expected from United or Arsenal. Pressure बट नहीं दे है. आर टॉप ऑफ द टेबल एंड अगर प्रेशर नहीं है तो you have nothing to lose ना. बट आई फील कि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब जो कोई बोल नहीं रहा है. तो Oh, of course, Sunil is right. ठीक है, Spurs have नहीं done बोल very रहा. well. हट. अपना जो फ्रेंड है आलोक बद्री, उसका भी चैनल है, right? He's joined us a few times. Yeah. वो तो खुद ओ हाँ, बाय द वे वी शुड मेंशन कि मानस एंड निधि कल गेम में थे. Oh yeah, they were at Old Trafford. Melissa and the Monk were at Old Trafford. They got to watch last minute goal feeling actually at Anfield, but a goal being saved, whatever it is. Unlike at Anfield, they got to see it at Old Trafford, the real feeling. So I'm sure they appreciate it. हाँ, आई होप उनको मजा आया होगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे. एटमॉस्फेयर बेटर लगा होगा एनफील्ड से. वो दे आल्सो सॉ द मर्सीसाइड डर्बी Of course. लिवरपूल जीता. बट वो पता नहीं यार, वो अगेन जैसे मैंने प्रीव्यू में बोला था, एवर्टन कभी फाइट करता ही नहीं है लिवरपूल के सामने. वो गेम आई डिडंट थिंक इट थोड़ा बहुत रेड कार्ड आया ना, मैं बोला रेड कार्ड आने वाला है. Ashley Young को आ गया रेड कार्ड. वो स्टार्टिंग में Of all गेम people. स्पॉइल हो गया. It has the most red cards in any derby, the Merseyside derby. Yeah, but like of all people actually. 2 yellow cards, 2 of the बहुत saddest yellow cards in my life I've irresponsible था seen. वो. हाँ, But both those yellow cards cannot be contested. The worst yellow cards to take in the first half of any But game. dude, Liverpool should have मतलब bulldozed that game I think. पता नहीं क्या हो रहा था. I mean, this is the point, right? कि Liverpool are also not doing well. They've had injuries this season, ठीक है? They've had struggles in defense. But the ticking factor there is Klopp has been there for 6 years now. Yeah. That's what end of the point again comes back to United here. कि भाई तू time दोगे, struggling start होगा, manager will get his players. तुम लोग favoritism बोलो, जो भी बोलो, अभी जो है तो है. तुम लोग का नया manager चाहिए तो नहीं give list of managers. See who will succeed over here. You think Zidane's going to come touch this squad? You think Zidane's going to come to United? You think Ancelotti's going to come to United? One sec. I was just thank God you took his name. He went to fucking Everton. I'm just saying, guys, कि यार थोड़ा When realistic Everton बनो. knows where they were, Ancelotti went to Everton. So I think, unfortunately, तूने उसका नाम लिया. One good season, one average season or bad season doesn't mean you fire him in the third season. We're not settling for a poor standard. You're accepting where you are and you want to get better. But by just saying the universe will give us better if we get new manager. वो ऐसे ही करना है तो बस Yeah, तुम but सबको Liverpool, I pray don't करते think- रहो. Liverpool are happy with their management, and I think United also are warming up to Ten Hag. I feel we're warming up towards the evacuate exit No, button. नहीं, कल मैच में फैंस का डिसकंटेंट फील हो रहा था. Yeah, लाइक हाफ टाइम में yeah. देयर वर लॉट ऑफ पीपल बोइंग एंड एक डिसकंटेंट ग्रो हो रहा है कि पीपल वांट टू सी गुड फुटबॉल यार. मेरे को बस और बाकी डीप में नहीं जाने का कौन सा प्लेयर कहाँ फिट हो रहा है, कौन सा फॉर्मेशन. वी वांट टू सी गुड फुटबॉल ठीक है. एटलीस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे. Let's go on to the fast होपिंग वीकेंड पे डार्बी के सामने, मतलब मैनचेस्टर डार्बी में एटलीस्ट वी प्ले सम गुड फुटबॉल यार. Yeah. It is very sad. That's okay. इसलिए guys, Three Wise Monkeys में अभी एक 1 लीटर का बियर मिलता है. मैं वही बोलने वाला था. जो Let's want to Sunil treats like a 330 ml only to deal with United games. Guys, Sunil started off with one beer till I got there like a 5-minute walk करके बोले मेरा तीसरा है. मैं बोला तीसरा क्या? Beer already. मैं बोला कितना में चल के आया है 2 बिल्डिंग क्यों छोड़ के? यार गर्मी इतना आजकल की, आई एम जस्ट थर्स्टिंग माय क्वेंच. Guys, ये beer is talking about, so we were also Quenching your having. thirst. सॉरी, क्वेंचिंग माय. मैं भी सोच रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि ये क्या हो गया. हाँ, मैं भी सोचा मेरे मुंह से बराबर निकला कि United scrambled the brain and the heart and everything yeah, else. लेकिन guys, not just the football bloody hell beer जो एफिंगर के साथ लॉन्च किया था, ठीक है? So ये Oktoberfest तो आ रहा है. Basically we're doing this for Oktoberfest चालू है Three Wise Monkeys में. In general we like Oktoberfest because great beer deals everywhere, ठीक है? We like, all three of us love beers. We like to drink.
We do not endorse alcohol. If anybody has this, moving on. I do. So looking forward to this weekend. मैनचेस्टर डर्बी में हमारा एक जैसा इंडिया इंग्लैंड गेम भी है, तो दोनों कॉम्बिनेशन है, तो जिसको जल्दी आना है सेकेंड इनिंग्स के लिए जल्दी आ सकता है. Sunday को Saturday को. England is playing on Sunday. Sunil is going to pass out at 7 o'clock. Maxo game. He's not making it the game. Are we doing a side bet? Wait, so it's Sunday or Saturday? Sunday. Sunday को England India है. At And 2 then o'clock. what time is your 9 o'clock. He is not lasting till 7. नहीं, Impossible. मैं Then you have to do a watch along with Sunil. सेकेंड हाफ Yes, में ही solo जाता हूं. देख बात करा किसी के साथ. नहीं यार, क्रिकेट में तो मैं सेकेंड हाफ में आजकल चालू करता हूँ गेम देखने का. What will you represent on Sunday? बारहवीं आर्मी और भारत आर्मी? भारत आर्मी ऑलवेज है यार. इंग्लैंड है ब्रो, इंग्लैंड है. नहीं, बट इंग्लैंड को मैं फुटबॉल में सपोर्ट करता हूँ, क्रिकेट में नहीं. I get half and half jersey. England football jersey, India cricket jersey. But ठीक है सुनील, Oktoberfest है, Indian cricket game है, and It's Manchester the last Derby. weekend of Oktoberfest. कुछ स्पेशल कर रहा है हाँ, क्या? तो वही वी आर हैविंग बियर गेम्स, जो एक फन वे ऑफ डूइंग प्री Beer games है कि competitive drinking? हाँ, बियर ओलंपिक्स We are games so we play for time pass इधर तो ऐसे. टीम जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा. तो गेम के फॉर्मेट में है, तो प्री ड्रिंकिंग कुछ और थोड़ा फन बनाने के लिए. बट ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियन निर्वाण का टीम हमेशा डिफेंडिंग चैंपियंस रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग निर्वाण शोज बोल सको Godfather FC. Sorry, she woke up. It's okay. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्री ड्रिंकिंग प्लस मैनचेस्टर डर्बी प्लस इंडिया इंग्लैंड जो मिक्सचर है, वो पूरा संडे को मजा आने वाला है. बट Let's see Sunil last till the game. Side bets in the compete करने comments, वाला है please. yes of course. Everybody from MUFCM knows this. There's a double header game or a game where you start drinking early. Sunil never makes it to the main game time, or he's passed out at the half time on the table. Point तो वही है. Comments में डालो. ऐसा कुछ नहीं था लास्ट टाइम. डबल हेडर चल आर्सेनल का गेम था, थोड़ा लेट भी था, फिर भी सुनील तेरा गेम देख के ही सो गया था. सेकंड गोल तू सेलिब्रेट करने लगा तभी सुनील जागा. वो सो नहीं रहा था. वो क्या वो ट्राइंग टू गेट म्यूजिक. नहीं, लाइक ऑलवेज मुझे घर जाके देखना पड़ा कि मुझे गोल याद था, बट घर जाके हाइलाइट्स देखना पड़ा यार गोल हुआ कैसे. Anyway, guys, moving on to score predictions. Nirvan, drum roll behind you, please. Reveal the scores for our predictions this last week. Guys, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. I need to zoom in the camera. क्या पका रहा है? सुनील 10 sad picks. Annie 6 pig. निर्वाण 3 king. दिख रहा नहीं है. अगली बार थोड़ा pretty much we'll get safe close. at 10 points मेरे हिसाब से. मेरे को लगता है मैं सेफ हूँ. ये वीकेंड आई कैन टेक थोड़ा रिस्क. What is the Manchester Derby? So we'll come to this. Wait. So, like Sunil said, अभी एक ही game week बाकी है for October. He अरे won. भाई तुम लोग अभी मेरे को बता दो पनिशमेंट क्या होने वाला है. नहीं, इस बार What did you get all three right? अरे if I lose then accordingly ना I'll say from the gut if I feel it or from the तुक्का I feel it. Then I'll give my predictions. Punishment क्या कहते हैं? पनिशमेंट वो तो सोच के बताएंगे यार. यार अभी तक सोचा भी नहीं है. सोच के बताएंगे. थोड़ा स्पाइसी रहना चाहिए. और खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोई भी जीत सकता है, आने भी हार सकता है. Hey, हाँ. what is my maximum? You can take 9 points still. 9 points ले सकता Yeah, हूँ. if you would like predict all the 3 हाँ, games. तो then it's open. Come on. I mean, we can all get 9 points. जो भी निर्माण प्रेडिक्ट करता है वही प्रेडिक्ट करेंगे क्या? तो कैसे जीतेगा? I'm predicting last. That at least you can do कि जो निर्वाण बोल रहा है. घंटा मैं हाँ, तो निर्वाण तो लास्ट जाने देते. Since I am leading, I'll predict first. ठीक है. अच्छा, what are the games you're predicting? Manchester Derby, obviously, Arsenal, Arsenal, Sheffield, and guys, what both of you decide. मेरे हिसाब Chelsea, से Brentford और Crystal Palace, Tottenham. Palace Tottenham I मेरे think हिसाब Palace से because Tottenham lead कर रहा है, तो let's see कि When will Tottenham get this at chance? the end of the week Tottenham अपना lead retain कर पाता है कि नहीं. Correct. So Neil, Manchester Derby पहले. हाँ, तो मैनचेस्टर डर्बी मेरा दिल तो हमेशा की तरह कहता है कि यूनाइटेड जीतेगा. कब्बक दिल. पहली बार दिल से देना prediction. बट नहीं, मैं दिमाग से देना चाहता हूँ. मुझे लगता है सिटी जीतेगा. showing the board. हो गया सब देख लिया. मुझे लगेगा सिटी जीतेगा 3-1. मैं अपने दिमाग के साथ में जा रहा हूँ. कहाँ है? ओल्ड ट्रैफर्ड में. हाँ, बट फिर भी बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड पे यार मैंने अब तक स्टार्ट अच्छा देखा नहीं. फिर डू अ गुड स्टार्ट. इधर भी स्टार्ट अच्छा नहीं देखा. लाइक अपन पहले गोल मारे तो तेरे चांसेस कि हम गेम को डोमिनेट करें थोड़ा पहले ही अपन बैकफुट पर चले जाते हैं यार. तो माय प्रेडिक्शन इज सिटी विनिंग 3-1. बट ऑफ कोर्स मैं दिल से तो पूरा चाहता हूँ कि यूनाइटेड Have you noticed कि normally training game के पहले, they send you training pictures, videos,
We scored those Every goals. time I try to talk while giving predictions, you say, okay, moving on to predictions. नहीं. You But run there has been clicker no- win, तो मैं there has बात been करूँगा. there has been no video from our training also where we're doing well. We don't even do well on the training ground. What? Okay, Manchester worth saying that, Derby. worth saying that. Manchester Derby. No, One, I'm one. saying it last. Boss. 1-1. अरे No but chance I'm saying it you last. actually saying no different from हाँ he'll go last. तू पहले बता. Manchester. अच्छा, we're doing game. अच्छा, ठीक है. For me, Manchester Derby will be a Heart says 1-1 draw. Heart भी इतना चूता है like he can't be. नहीं ड्रॉ तो मैंने मैनचेस्टर डर्बी में बहुत टाइम हो गया नहीं देखा होगा. देखना पड़ेगा ये बार. I am saying 2-2 draw. चलो. 2-2 ड्रॉ. ओके. Not talking too much. निर्वाण क्या बोलेगा? मैंने ऑलरेडी बोल दिया है यूनाइटेड हारने वाला है. ये Maybe more not not बोलेगा. It's like the last week of an FPL game. Now should I take that? मुझे थोड़ा चल, गैम्बल United 1-0. हाँ थोड़ा गैम्बल तो उसे लेना ही पड़ता. चल. United 1-0. Yeah. मतलब हाउ हार्ड इज हैचिंग कि हम लोग को चांस ही नहीं जीतने का. वो ट्राई कर रहा है, जीत Top गया of the तो. table, top of the table. I don't care about these plebeians. सुनील आर्सेनल. आर्सेनल शेफील्ड यार आई थिंक वी शुड हैव मैं बोल देता हूँ जो अपन 4-0. हाँ जो अपने को शेफील्ड को करना चाहिए था शायद आर्सेनल वो घर पे करेगा. तो मुझे लग रहा है 3-0. यू आर गोइंग विद 4-0. 4-0. आज निर्वाण 2-0. I can't give the same predictions as y'all. I hit the point. इसलिए मैं ऊपर गया. 2-0 Arsenal. ओके. Spurs you can now go. Spurs Palace 2-1. 2-1 Spurs. Away, yeah, it's away. 2-1 Spurs. मुझे लग रहा है हाँ स्पर्स जीतेगा शायद 1-0 एक नैरो विन. मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है वो ड्रॉ होगा यार ये गेम. बट ठीक है, I'll do a 2-0 Spurs. But I won't be shocked if it's a draw. But that's not an official prediction. That's a fan feeling. So these are our predictions, Dude, guys. if your Spurs prediction and my United prediction comes right, we can go on top of the table. I changed my prediction. अरे अभी क्यों चेंज कर रहा है? 2-2 Spurs Palace. ओके. ठीक है, चल दे दिया. Arsenal and Nirvana on top at the end of the month. See, now push. This is an Arsenal fan. Pushing वाला all the time. Bro, at least we can. ठीक है guys, before the closing of the video कुछ और बात करना है. We have 2-3 minutes. आई थिंक तुम्हारा लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट द गोलकीपर प्रॉब्लम यार. व्हाट It मेरे is- को दिल से बता कि रैम्सडेल डिजर्व करता था ड्रॉप होना. मुझे नहीं लगता वो. I was gonna say Raya is good. I don't think we needed it immediately. मतलब नहीं रैम्सडेल ड्रॉप होना डिजर्व करता था क्या उसको? That's what I'm saying, like- एंड उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया यार बेचारे को. और अब उसको वापस लाना उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ये हो चुका है. Confidence, morale सब लोग हैं. And I don't think Ramsdale was playing at a level कि उसको ड्रॉप करने की जरूरत थी. Maybe Raya is an upgrade. That's a separate story. Maybe. I'm not saying he is. और अब तो I'm गैम्बल ले actually- लिया या तो उसको स्टिक करो. I understand your point. मेरे लिए एक ही चीज है. Ramsdale now was a 4-on-5 keeper. So if you can replace a 4-on-5 with a 4.5, why not? It's a step up to become a Champions I League don't think serious it's a side. 4.5. I think at best it'd be like a 4 versus 4.2 on 5. Like if you're comparing it My that way, point- there's not that much of a difference. It's not like between replacing Raya a and world class Ramsdale. keeper with a पर गोलकीपर Like काफी tomorrow you tell me that Iker Casillas is coming instead of Ramsdale, I'll be like, yeah, look, please seat Ramsdale. But it's Raya versus Ramsdale, and I would say if there was a top 20 keepers, they'd be like one position after the other, if not. नहीं Time पर for the ये same position. मैंने भी सोचा था आर्टेटा शायद कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहा है कि दो कीपर को खुश रखेगा ये वो. बट आखिर में कीपर इज ये भी नहीं खेला है ना कॉन्फिडेंस Ramsdale. पोजीशन भी है. इफ द कीपर को मालूम नहीं है कि वो पूरा सीजन स्टार्ट करने वाला है, वो पासेस और वो कॉन्फिडेंस में नहीं कर पाएगा. Confidence है ज्यादा guys. वो chemistry होता है डिफेंस के साथ. Yeah, But तो center backs morale- have to know कि they can play that blind pass behind, and each keeper has their own style. And you can't unsettle your. इस मामले में आई थिंक वी हैव टू प्रेज टेनाग आल्सो कि ओनाना के इतने मिस्टेक्स के बाद भी ही डिडंट ड्रॉप हिम. तो ओनाना को लगेगा यार चलो ये मेरे को बिलीव करता है, कॉन्फिडेंस आया तो कल वो है ना और एक साइन किया है. बहुत ज्यादा टास्क है keeper. तो वो ओनाना ने कल दिखाया नाम क्या है? कि जब पेनल्टी आया तो ही शोड कि चलो उसको बाकी लोग बिलीव कर रहे हैं तो ही शोड समथिंग. मतलब कुछ रिजल्ट देखने मिला. I just have a feeling that Ramsdale now difficult situations में he shows up damn well, and I feel like वो Mudryk का वो save हो जाए. नहीं, I think it was just very unlucky for any keeper. Firstly, though, no keeper would like Mudryk goal मारेगा. So that's very. So Mudryk wasn't like Mudryk goal मारेगा. What do you mean? That's the best way to beat a keeper. The player also doesn't know what the fuck he's doing.
It's like blindfolding a person and saying go take a penalty now. उसको भी मालूम नहीं कहाँ देख रहा है. Like getting a chance card na in Monopoly. Yeah. Land on Mesa, Skip, go back 3 stations. go back to Goa again, take $200. ठीक है guys, thank you so much for tuning in. वीडियो पे लाइक छोड़ना, सब्सक्राइब टू द चैनल, ट्यून इन टू आवर स्कोर्स. आपके ये तीनों मैच के स्कोर प्रेडिक्शन डालना नीचे प्लीज. लेट अस नो व्हाट योर प्रेडिक्शन आर फॉर दीज गेम्स फॉर मैनचेस्टर डर्बी मेनली यार. ऑल्सो इफ यू कैन जाके मगवायर का वीडियो देखना जो प्रशांत और प्रशांत ने डाला था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैरी मगवायर कमिंग बैक टू द स्क्वाड. हम लोग ने इंटेंशनली वो वीडियो बनाया और we didn't want to break it up because उन्होंने बात किया है तो go view that video. They've done analysis of you know. क्या पका रहा है ब्रो, जाने देना. नहीं यार तुम लोग थोड़ा और सुनो यार. और ठीक है. शायद और एक है कि शायद दिस वीक में वी विल बी एबल टू इंटरव्यू एडम मकोला. Yes. इफ यू नो एडम मकोला फ्रॉम फुल टाइम डेविल्स, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए तो प्लीज सेंड इट टू अस. Yes. Done. Okay. Nirvan, thank you for coming and cooking for us. Sunil, thank you for giving us Hopefully, some beer. yes. I don't know what I'm doing. It's my house. That's why I'm here, I guess. Hopefully weekend में we'll see you with Sure. another punishment. Hey, Hey, के लिए he's मिल that रहा है child. हाँ, Beer Olympics ले best of luck defending your title. Wow, guys. See you.